Sheprenuer शक्ति की अप्रैल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर होस्ट श्रेष्ठा वर्मा और जैसे कि आप जानते हैं Sheprenuer शक्ति महिलाओं को और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास सीरीज है। वैसे तो इस सीरीज का आगाज विमेंस डे के अवसर पर किया गया था, लेकिन क्यों महिलाओं को सिर्फ विमेंस डे पर ही सेलिब्रेट किया जाए? आखिर महिलाएं तो हर दिन मेहनत कर रही हैं, हर दिन कुछ नया कर रही हैं। इसीलिए टाइक्स टीवी Sheprenuer शक्ति को हर महीने सेलिब्रेट करेगा। उसी सीरीज का एक अगला एडिशन लेकर आज मैं आपके सामने हूं और मेरे साथ आज है रितिका कुमार। शी इज द को-फाउंडर एंड CEO ऑफ STEM Metaverse। Welcome, Ritika. Thank you, Shrestha. So Ritika, can you before I really come to the questions, can you tell me about your journey, how you really begin with it and how you established STEM Metaverse? So this isn't my first startup. This is actually my third startup. I started very young. मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 21 साल की थी जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप रन किया एंड वो एक सर्विस सेक्टर में था, तो आई वांटेड टू डेवलप अ प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने एक्चुअली फिर स्विच किया। तब मैं क्रिएटिव राइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी फॉर कंपनीज लाइक NIT एंड टाटा इंटरैक्टिव एंड वी गॉट सम वेरी बिग क्लाइंट्स एंड हम उनके लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन के क्रिएटिव कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं वो बनाते थे। एंड फिर हम लोगों ने और चीज़ों में भी डाइवर्सिफाई किया। अच्छी खासी एक टीम बन गई थी जहाँ पे हम लोग टेलीविजन स्क्रिप्ट्स भी लिख रहे थे, ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी बना रहे थे और एजुकेशन में भी और काम कर रहे थे। So education is something that I was very inspired by. I felt that this is one domain which requires a lot of development, जहाँ पे बहुत ज़रूरत है अच्छे कंटेंट की। तो फिर धीरे धीरे करके ये मैंने एक्चुअली सेटअप किया। इसको सेटअप किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। आई हैड बिकम अ न्यू मदर व्हेन आई टुक अ ब्रेक। बीच में मैंने कुछ साल काम भी किया था। So when I took a break from my job, तब I decided to actually set this up। और जब इसको सेटअप किया तब लगा कि सिर्फ औरतों को हायर करना चाहिए मुझे। तो आप अगर पहले के कुछ आर्टिकल्स देखें तो आपको नजर आएगा कि एक्चुअली वी बिल्ट अ टीम ऑफ ओनली वुमेन एंड इसलिए किया था क्योंकि हम औरतों को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड टेक्नोलॉजी अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकती तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो this is one thing. For a long time, only my co-founder Varun Mishra was the only male in the team, and बखूबी सब लोग औरतों को बहुत अच्छी तरीके से manage करते हैं. He doesn't feel that he's the only man in the entire team, and he's done such a fabulous job of it. So actually अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर से, एक बच्चों का न्यूज़पेपर छापते हैं हम लोग द यंग क्रॉनिकल के नाम से। एंड फिर हम लोगों ने अब डाइवर्सिफाई कर दिया है, काफी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है एजुकेशन सेक्टर के लिए। So, the edtech sector is changing drastically and rapidly at the same time. There are new disruptions, new technology that is shaping the edtech industry. So, किस तरह से आपका जो स्टार्टअप है वो काम कर रहा है और किस तरह से आप उस टेक्नोलॉजी की और उस चेंज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? So, कोविड से पहले एडटेक पे कोई टेक पे ध्यान नहीं दे रहा था व्हेन इट केम टू एजुकेशन। तो हम लोगों को भी बहुत वी हैड एन न्यूज़ ऐप फॉर चिल्ड्रन एंड तब हम लोगों को लगता था कि नहीं हमें भी एक फिजिकल पेपर भी लॉन्च किया था हमने एंड वी वर लॉन्चिंग अ रोबोटिक्स लैब इन द फिजिकल स्पेस। इट वाज अ मेकर स्पेस। हमें लगता था कि जब शाम को बच्चे आते हैं जिनको थोड़ा सा टिंकरिंग का शौक होता है तो उनके पास एक जगह होनी चाहिए आने के लिए। तो वो हम सेटअप कर रहे थे। वी वर गोइंग टू लॉन्च दैट इन मार्च 2020। हमें IIT दिल्ली से ग्रांट भी मिली थी एंड एट द पॉइंट ऑफ टाइम दिस इंटायर कोविड हैपेंड एंड वी डिसाइडेड कि नहीं हम जहाँ पे ऑनलाइन थे वहीं पे रहते हैं। बट वी टुक अ लॉन्ग टाइम। वी डिडंट वांट टू जंप इनटू द मार्केट। सो बिकॉज क्या हुआ कि हम लोगों को शायद एजुकेशन की भी थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें काफ़ी लोग नए लोग आए एंड उन्होंने काफ़ी जल्दी स्केल अप करके पूरा जो लोग एडटेक पे they in a way built the market for us, but they also ruined it to some extent because उन्होंने क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया एंड एजुकेशन में क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके इंस्ट्रक्टर्स कौन है, आपके टीचर्स कौन है, आपके
क्या कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कैसे उनको मॉनिटर कर रहे हैं, एनालिटिक्स क्या है. दोज आर थिंग्स दैट आर नॉट वेरी इजी टू बिल्ड एंड स्केल अप वेरी फास्ट. बट हम लोगों ने एक चीज जाहिर से रखी हमेशा अपने, कि हम हमेशा स्कूल्स के साथ कदम से कदम मिलाएंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूल एजुकेशन इज ऑब्सोलीट. वी हैव नेवर बिलीव्ड इन दैट. वी फील कि अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है तो स्कूल्स की कुछ तो वैल्यू होगी, राइट. एंड वही हुआ जब स्कूल्स खुले वापस, बच्चे वापस स्कूल्स चले गए, एंड फिर उसके बाद एडटेक काफी डाउन हो गया. And but we have always managed, we still managed to retain the same level of sale that we had when COVID was on. Since highlighted this point that there was a business before COVID, then COVID, now we are in the post-pandemic era. So how it has affected your sales and your business? I think हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ. ना हमारा कोविड के दौरान ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा स्पाइक था, बिकॉज कॉम्पिटिशन वाज देयर टू कॉम्बैट दैट. But it's not like we've been badly hit now. We are still at the same space. In fact, we are growing better, I would say, because we've always maintained कि जब आप टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वर्क्स बेस्ट जब आपके पास एक्सपर्ट्स हो. आज मैं अगर बैठी हूँ यहाँ पे दिल्ली में और आप मुझे वही पढ़ा रहे हैं जो मेरी टीचर मुझे ऑनलाइन, जो मुझे ऑफलाइन स्कूल में करा सकती है, then that's not the right way to go about it. I would take this online only if you get me an instructor who is very well qualified, जो मुझे अपने घर में या अपने स्कूल में नहीं मिल सकता है, right. And the other thing that it needs to change is कि ऐसी cities जो second tier 2 and tier 3 towns and cities में, उनके लिए हम कैसे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या ऑफरिंग्स हैं, वो बहुत मायने रखता है. सो अगर टेक्नोलॉजी से एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है, here there are 2 points. One is access, two is quality education. And when I talk about access, I'm also talking about affordability, right? It needs to be in a way accessible and affordable and good quality. तीनों एक साथ नहीं मिलते. तो हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया इसके लिए, बिकॉज हमें लगता है कि scholarships is the best way to answer this question. I can get a good quality teacher if I'm paying that teacher well. But how do I pay that teacher if it's an exorbitant amount, right? So if that teacher is very well qualified, they're going to ask for a good amount as well, right? They want to be paid. So how do we get scholarships to kick in? So we built an NFT based platform where children can use their talent to earn scholarships. So scholarships को kick in करने के लिए we basically built a platform called zoodle.in. एंड zoodle.in पे बच्चे अपनी आर्टवर्क को या अपनी क्रिएटिव राइटिंग को डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और जब वो अपलोड करते हैं तो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं. दैट क्रेडिट कैन बी यूज्ड फॉर scholarships. That's the point basically. Okay, so you highlighted this very unique thing, NFT, which is very trending also. We come across this term a lot. How are you incorporating this in your business, in education business? If you can, I understand this point, but if you can put some light on this to help my audience understand this in a better way. Right. So NFT is basically non-fungible token. इसका ये मतलब है कि आपने जो अपलोड किया है आप उसको इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकते. जैसे कि एक एग्जांपल बहुत इजी मैं दूंगी कि आप फ्रांस गए, आपने मोनालिसा की पिक्चर ली, वही मोनालिसा की पिक्चर एक लूव्र म्यूजियम जहाँ पे वो मोनालिसा है, लूव्र म्यूजियम ने खींच के डाली, और एक आपने एज अ विजिटर खींच के डाली. दोनों सेम चीज है. मे बी यू क्लिक्ड अ वंडरफुल पिक्चर, बट द वैल्यू ऑफ दीज टू पिक्चर्स शुड बी डिफरेंट, राइट? जो लूव्र डालता है और जो आप डालते हैं उसकी दोनों की वैल्यू में फर्क होना चाहिए, राइट? दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, मे बी पिक्चर्स ऑफ द सेम काइंड. तो व्हाट हैपेंस इज जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पिक्चर डालते हैं, से आई एम अ कस्टमर एंड आई हैव कम ऑन टू एन आर्ट गैलरी व्हिच इज एन NFT आर्ट गैलरी, राइट? नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन, आई सी बोथ द पिक्चर्स देयर. एक लूव्र ने डाली है एंड एक किसी आर्टिस्ट ने, फोटोग्राफर ने डाली है. सो मैंने दोनों को क्लिक किया. When I click on both of them, it will take me back to the origin.
where who uploaded this picture, how many times has it been bought, how many times has it been sold, resold, all of that, right? So now I know कि अच्छा ये पिक्चर ओरिजिनली लुब्रिन ने डाली थी और ये दूसरी पिक्चर है जो किसी फोटोग्राफर ने डाली है. ऑफ कोर्स वैल्यू में डिफरेंस है, बट एज अ कस्टमर आई नो व्हाट आई एम बाइंग बिकॉज दिस बोथ दीज पिक्चर्स आर ऑन अ ब्लॉकचेन और वो पूरी चेन मुझे दिख रही है सारे ट्रांजैक्शंस की, राइट? अब मैंने भी खरीद लिया उसको. सो इसमें बहुत थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, बट वेरी इजीली इट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर एक बच्चा एक पिक्चर अपलोड करता है, राइट, जो उसने खुद बनाई है, तो उसके भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते हैं, he'll keep earning some credits. This credit is not a cryptocurrency. We built our own blockchain क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी हम लोग क्रिप्टो में नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते थे. मार्केट डायनेमिक्स में बच्चे क्यों, हम तो बस इतना चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर मिले, उनके काम को थोड़ा स्पॉटलाइट मिले, एंड वो थोड़ा सा अगर कुछ क्रेडिट्स उनको मिल जाते हैं तो दे विल बी इनकरेज्ड, राइट? एंड से मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी 2 पेंटिंग्स प्लेटफॉर्म पे बिक चुकी है एंड आई अर्न मे बी अराउंड 1200 रुपीज आउट ऑफ इट. मैंने जब अपलोड किया था तो मुझे 200 पॉइंट मिले थे, फिर 1200-1400 पॉइंट्स हो गए मेरे पास. अब मुझे एडवांस आर्ट का एक कोर्स करना है जो कि है 6000 रुपए का. तो एटलीस्ट आई कैन यूज दोज क्रेडिट्स टू गेट a little bit of a subsidy on that course. Now the point here is that if we are also reaching out to CSR companies. So if a CSR company comes in and says that Ritika, we need to fund 100 girls in STEM education. We're running a program called Girls in STEM. Can you identify those 100 girls for us? एंड सो व्हाट विल हैपन इज ये सारी लड़कियों की प्रोफाइल जितनी है प्लेटफॉर्म पे उनको चली जाएंगी. दे विल बी एबल टू से कि अच्छा ये कौन से स्कूल की है, कहाँ की है, इन्होंने कितना वर्क अपलोड किया है प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने शायद 2-3 और क्लासेस भी ली हैं, नहीं ली है, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप मुझे भेज दीजिए. देन आई विल सेंड अ mail to them and ask them to upload any financial details, their Aadhaar card details, all of that. And that the CSR company will then be able to identify and see. And after that also they'll be able to see कि इस बच्चे ने कितनी progress की, where did the money go. So that transparent process will kick in, which is what companies also want, right? So say today if I'm a Godrej or I'm an Aditya Birla and I'm spending so many crores in CSR, I would also want to see how that money is benefiting anybody who's using it. So you can see here how NFT is actually helping students learn new things. They can, earn things on the basis of their talent, on the basis of their artwork, and really learn from this platform. So this is something really unique which you are doing. Now you have mentioned this point that you have had 3 startups. तो इतनी सभी स्टार्टअप्स की जर्नी रही, आपने सबको कहीं ना कहीं एक स्टेबल स्टेज तक पहुंचाया. उस पूरे जर्नी में जो गवर्नमेंट का एक रोल है वो क्या रहा? गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है. आई थिंक पूरा एजुकेशन सेक्टर चेंज हो गया. देयर हैव बीन सो मेनी initiatives for women. I have personally received some great mentorship from the best of people because I was part of the Startup India mission. And काफी चीजों की जो जानकारी नहीं थी 3 years का, I think the entire Startup India mission was great because 3 साल का आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मेंटरशिप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मिलती है. तब तक सीड फंड स्कीम नहीं लॉन्च हुआ था, तो ऑफ कोर्स नाउ वी आर एन ओल्डर स्टार्टअप. So that way मतलब काफी initiatives रहे, and I've seen that when it comes to skilling education and per se it's been phenomenal. आजकल टीचर ट्रेनिंग पे बहुत जोर आ गया है. People are talking about metaverse, using online technology for empowering schools. So the entire objective of the way education is seen today, it has widened, and वो बिना government initiatives के नहीं possible होता. जब गवर्नमेंट ऊपर से एक पॉलिसी चेंज कर देती है तो नीचे लोगों को अगर नहीं भी समझ में आए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो कम से कम सोचने लगते हैं उस डायरेक्शन में. Then they try and see people and seek people who are looking for, who can help them make those changes, and that's where it's benefited us. If we particularly talk about the STEM, fields, so
the representation of females and the girl child is very very less. So what are your thoughts on this, and what are the possible things that we can really do to motivate people to send their female child to this field? A lot of people ask me this question, why are women not in leadership roles? And I'll tell you how it's connected. It's connected because of this, because a lot of men initially, for the past 2 generations, I would say, have been encouraged towards engineering and engineering related topics, fields. So with the result, what happens is that, it's very, problem solving and those kind of things comes very natural to them, rational thought process and all. So they are one of the reasons, of course, that they're able to rise faster. Now for women, what happens is हम लोगों को हमेशा encourage किया जाता है कि म्यूजिक में जाओ, आर्ट में जाओ, वो सब में जाओ. तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे चेंज हो रही हैं. More and more women have started getting into more mathematical and engineering related roles, and slowly this will change. But at the grassroots level, बहुत सारी चीजें होनी बाकी है. We really hope for that. एंड अगर मैं पर्सनली आपके करियर की बात करूँ तो आप मैनेजमेंट फील्ड से आती हैं. यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़ फ्रॉम माइका और स्टेम मेटावर्स, जो कि एक एकदम ही डिफरेंट फील्ड का स्टार्टअप है. सो किस तरह से ये एक फ्यूजन हुआ? My mother was a science and art teacher. She was teaching art and science, and my father was into science. He was with the Indian Navy, so he's designed a whole lot of their communication network, basically. This amalgamation of science and art was always there. In fact, I joke with my co-founder. He's an IIM guy. And I joke with him कि मैं ज़्यादा robots बना चुकी हूँ और drones design कर चुकी हूँ. And I learned programming only at the age of 30. When I was looking for teachers who could teach programming, I ended up learning a lot more. And in fact, ये inspiration भी आया robotics का तो मेरी daughter की वजह से आया, because उसके toys जब टूट जाते थे तो मैं उसको repair कर लेती थी. And then I realized that, this was always there. And I took up journalism and then management and all of that. But this science backing was always there. In fact, मेरी तो ना, I would say कि मैंने 11th and 12th में science नहीं ली. But जब मैं काम करने लगी, I told you I ran my first startup where I created these computer-based training modules. मैंने पूरी +2 तक की science कर ली थी उसमें, because मैंने इतने सारे science shows की and science training modules create किए. So somehow it just happened, and I don't know why, but I just took up, commerce at that point of time, and then went on to journalism. I was always very excited about it, but science, I didn't realize कि मतलब हमेशा था कहीं पर. And now I think I do a lot more than most people from the science background do, and I can teach it well. That's the power of females, we can say. We have this inner power. So that's what we are celebrating also. What is that one thing which really keeps you motivated? Because being a female, there are lots of challenges, lots of responsibilities, but we have to keep going. So what is that one thing which keeps you going? I don't know, actually. I've just read I have only one trait, like you just said, keep going. That's it. क्योंकि ऐसा कोई बहुत वो नहीं है. I like to see results as well, and I keep getting results from time to time. But I think the only thing about entrepreneurship is to keep going. That's it. Don't stop. Ritika, you are a family woman also. You are a professional also, running a wonderful startup. So how do you manage these two extremely different roles? I plan in the morning, I spend like a good amount of time with the to-do list, and I create a list for my work as well as my personal life, and I create a task list that I follow very religiously. Of course, there are times that I don't follow it, but more or less I have an idea of what I'm going to achieve in a day. So that gives me a good head start, because it also helps me plan for the next day. So that planning is very important. We can't lose sight of what we need to do. Like, before we really end this conversation, I want one message from you, because you are doing really amazing. So you are actually an inspiration for a lot of women out there. So what is that one message which you want to give to my female
viewers who might be inspired by you? I don't have an inspiring mantra, so to say, but I'd only say that don't worry. It'll all fall in place, and whatever you want and whatever you think will happen will not happen. Hopefully something better will happen, but it will take its own time. तो ये थी हमारी आज की शीप्रेन्योर शक्ति। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हो या किसी भी तरह का काम करना चाहते हो, अगर आप में एक जज्बा है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह की और शीप्रेन्योर शक्तियों से मिलने के लिए जुड़े रहें टाइस टीवी से। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जाते जाते नीचे बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड यस, keep reading enticing startup stories only on www.tice.news.